Today is the second tranche of announcements towards building a Atmanirbhar Bharat. The slides will go on, but before we start the slides, just want to let you know that today's initiatives, which are getting announced as a part of the second tranche that we are announcing today, focuses on migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people, small farmers. And when I say small farmers, there are a few items we say. So in all, about 9 steps that I will be announcing today. 3 relating to migrant workers, 1 related to the Sishu loan within Mudra, 1 related to street vendors, 1 housing, 1 related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, and 2 related to farmers, particularly small farmers. But even as I say this, since you have been keenly listening and hearing what we are saying, many of them may have overlaps with the next package that we'll announce. So on farmers, for example, it's not as if I'm giving only 2 steps, nothing more. Arey kisan ke liye chhod de kaam. No, there will be more. But today I'm bringing in 2. Just as I said in each of the package, we'll keep in mind and prioritize concerns related to migrant workers, poor, those who are, in need, and therefore that will continue. So if I have not spoken about a certain thing today, it's not as if Government of India has forgotten. After all, let's please remember, within hours of having announced the lockdown, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was for the poor, was for transferring cash to the poor, was for giving grains for the poor, and so on. And that's not enough. We will come with more. We are announcing more. So let's not look at each one of the silo as though that was the only thing. As I said earlier, there are tranches of announcements. Many things might overlap. Many of them might get mentioned here as well as mentioned once more somewhere else. So just a broad understanding on that. And before I get to talking about what we are doing on the migrants, I just want to let you know that about 3 crore farmers had availed loans which were given to them earlier in concessional rates, I think, which was direct support to farmers. And those 3 crore farmers had availed of agricultural loans which were over 4 lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores of credit given to them. And those people who have availed of these credit through the Reserve Bank were also given a moratorium. For the next 3 months, you don't have to pay your EMI and so on. Now, the interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. So that is a thing which was already availed of, and for that we are giving a bit of an extension. And in the last 2 months, 25 lakh new Kisan credit cards have been given, which entails that they can take concessional credit. They're actually marginal farmers. So we've not forgotten them. And those 25 lakh new Kisan credit card holders have also been given or sanctioned a loan which totals to 25,000 crores.
These are recent happenings. So there may have been a lockdown, but the government was not sitting quiet. It has been attending to a lot of those who are in the margins of our society, who are desperately in need of assistance to carry on with their small work. So that is something which I want to draw your attention to before we move on to today's package. मैं सबसे पहले तो मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है, एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा, इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात कर लें। पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो। जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की इंश्योरेंस करवाने की बात हो। गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला। और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा। तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। और कहीं ना कहीं जो इतना सकारात्मक वातावरण बना, लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ, इससे उद्योग को फ़ायदा मिलेगा, छोटे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा। तो आज का जो हम करने जा रहे हैं, गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए और 1-2 बिंदु किसानों के लिए, आज बाकी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने आएगा। तो इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है, और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है, जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं पिछले 3 महीनों में। उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। Again, one more thing which I'd like to draw your attention before I go to today's announcements. Liquidity support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring only to those things which have happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. I want to just draw your attention that 63 lakh loans
of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again, refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. Then again, rural infrastructure. Also through a fund which is operated by the NABARD is the RIDF, which is the Rural Infrastructure Development Fund. Through this, only again in March 2020, a support of 4,200 crores has been provided for rural infrastructure. So rural areas and their infrastructure work is also being provided for in March alone to the extent of 4,200 crores, and that's happened during the COVID period. And finally, state governments do also get working capital assistance, and to the extent of 6,700 crores have been sanctioned for them to procure agricultural produce, which means they can take things from the farmer, they can provide things to the farmer, and when they procure agricultural produce, that money goes into the hands of the farmers themselves. And what is the amount there? 6,700 crore as working capital was sanctioned for state agencies to do the agricultural produce procurement. That again is money going into the hands of the people in the ground, particularly in the rural areas. I'll go over to the urban poor, but before that in Hindi. कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीज़न भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है, और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपये का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। I spoke about the rural areas, rural poor, rural money reaching the hands of the farmers and so on. Now I just very quickly mention about urban poor. In just the last 2 months, again, during the COVID period, again, what activity has happened to reach out to the urban poor, which includes migrants? Government of India has permitted state governments to utilize State Disaster Response Fund, which goes from the center, for setting up shelter for migrants and providing them food and water. Just rough estimate that I'm giving you, 11,000 crores were sent in that name through the SDRF, with which they run the shelter homes, with which they give them food, with which they take care of them. And that money was also sent from the center. Of course, states do have a right, but that was given. And using that money, many of the migrants have been attended to. So I want that to be kept in context when we talk about attending to the migrants. Again, there are shelter homes which are under the shelter for urban homeless category.
That is something which normally is there. But in those shelter for urban homeless, 3 meals are provided entirely at the cost of the central government. So homeless who live in urban areas, particularly in the COVID situation, are getting 3 meals per day. And I'm not saying this as though, oh, we've done this. I'm saying more from the point of view of we are conscious. We are attending to the migrants and we are giving them in various different ways. Food, taking care of them in the shelters, reaching cash to them. All this has been done, and therefore I'm enumerating. And did I do this some other time last year? No. I am showing you what has happened in the last 2 months, the critical lockdown period. So in shelter homes, 3 meals are being provided for people who are urban homeless. Now, the other thing, you may recall when the Prime Minister addressed the nation, how India's capacities can be utilized so that we can serve the globe, and how those capacities are lying dormant, and we are the ones who have to give the stimulus. All of us will have to. 12,000 self-help groups all over the country. This is an example which Honorable Prime Minister referred to. 12,000 SHG groups have produced over 3 crore of masks and 1.20 lakh liters of sanitizers, again during this COVID period. And the self-help groups in urban centers are with urban poor. So urban poor are contributing also in this COVID period. And self-help groups, as you know, is something which is supported by the central government also. Another experiment which was successful is for disbursing revolving funds to the SSGs, and these revolving funds for the self-help groups have also become on board a Paisa portal. It is called PA, all in capital, I is small and SA, Paisa portal, as of April. And now many state governments, seeing the pilot project which had happened in Gujarat, want their people also to get onto this, and through this a lot of across the state benefits which they can get will be available for the SHGs. And lastly, for the urban poor, 7,200 new SHG groups have been formed, newly formed for the urban poor, and that commenced from 15th March. Critical COVID time. New self-help groups for whom assistance get given, and they get benefit from revolving funds and so on to catch on with what they want to do for their livelihoods. So during these 2 months, COVID period, you have these activities which have happened with central government participating actively in these 2 months only. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके किया, और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को उसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई, ऐसा प्रावधान वहाँ पर करवाया गया। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइज़र्स का उत्पादन किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये संकट की घड़ी में हमारे काम, और ये बड़ा काम देश के लिए स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों ने किया है। यही नहीं, 7200 नए स्वयं सहायता समूह इस समय में बनकर और शुरू हैं पिछले 2 महीनों में। और जो रिवॉल्विंग फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा एक पोर्टल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट, अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। There's definitely a lot of concern and a legitimate concern about migrant workers now going back to their respective states. And will they be there without any opportunities to earn their livelihood? So I would like to draw your attention to say that you know that we had announced the increase in the average wage rate from 182 to 202 rupees. I had made an announcement once earlier. Now, the question of these people returning to their states, will they stay without any provisioning? We have already generated 14.62 crore man days or person days of work generated up to 13th May, which is actually 40 to 50% more persons who have got enrolled compared to last May. So when there was no COVID, what was the number? It is at least 30 to 40%, 40 to 50% more than what it was before. We have enrolled all of them. We are making provision through the Rural Development Ministry to ensure that they get enrolled, they get work, they get the due payments. So work offered is now to 2.33 crore wage seekers. I think the data is of yesterday, in about 1.87 lakh gram panchayats. So the migrant workers who are going back, and if in case they are joining the Manrega there, are being actively enrolled and provision through the respective ministries being done, and they are being taken. We've ensured that they're going to be entertained even there. They're not going to be sitting for wanting of some basic work. States and union territories have been advised to provide work to these migrant workers as per the provisions of this Manrega Act. So we are continuing to monitor, and the work during the monsoon will also be actively taken up, whether for plantation, whether for horticulture, whether for livestock related sheds, related building, vagera. So on all of them, these workers who go from here are going to be actively engaged. So I just want that to be made sure. The annual actual expenditure till date is around 10,000 crore. Now, even if it's more, we are making provisioning for that. जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्यों में गए हैं, उनकी भी मदद एमजी नरेगा के माध्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं। और अब तक 14 करोड़ 62 लाख पर्सन डेज जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक, और इस पर कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। जो काम ऑफर किया गया है वो 2.33 करोड़ जो काम मांगने वाले हैं उनको कल तक किया गया, और ये लगभग 1,87,000 ग्राम पंचायतों में किया गया है। इसमें 40 से 50% लोगों ने अपनी इनरोलमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की है। पिछले साल के मई महीने के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि अगर पिछले साल 100 ने की थी तो इस बार 140 से 150 लोगों ने की है। उस तरह से उसका आंकड़ा लगभग बड़ा है। और एक विशेष मुहिम पूरे ज़िलों में देश भर में चलाई जा रही है कि ये जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं, और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। Again, before I go over to specifying what programs we have for the second tranche, one quick look at some major reform steps which are in the pipeline. You know, the labor codes related matter is in the parliament. Some reports are also with the standing committee. We are committed to making it better for the workers, and the workers' welfare is top on our agenda. I very will quickly run through some of the points
All this is going to be shared with you in any case. But quickly I will highlight the fact that the minimum wages at the moment is applicable only to 30% of all the workers. We want to make it universal. We want to give that right to minimum wage universally to all workers. So that is one of the major things we are working towards, and as you know, it's all discussed in the parliament. It is getting, work is done in the parliament, it is happening there, but I'm giving you some of the highlights. Second is also the regional disparity in minimum wage which exists. We are trying to get over that problem, to get over the disparity which prevails by saying if there can be a national floor wage concept which can be accepted by all the states, so that the disparity which prevails between states of minimum wages can be gotten over. We are also talking about compulsorily giving appointment letters for everybody who is taken in, so that it gets formal, and also making sure annual health checkup is made mandatory for all the employees. Benefits also for workers in the interstate migration of workers, so that nowadays we come to know that workers don't get recruited through an agency or a group, which are normally the groups which bring in unskilled workers. Now employers are directly taking them on, and therefore for that also, coming from various destinations, we want to have a definition of interstate migrant workers. Again, on migrant workers, this will help in defining them better and reaching out benefits to them better. All this is in the parliament. I'm not saying it as a part of this package, but I'm only giving you a clear picture that we are committed towards improving the lot of the workers and making sure that migrant workers and other workers are treated a lot more with their formal benefits reaching them. Portability of welfare benefits is also being contemplated in the parliament for migrant workers. Again, looking at pan-India to all districts, we want to extend the ESIC benefits to all establishments which employ at least 10 people or more, and in some of the notified districts. Looking at also employees, establishment which have less than 10 employees, we want to, at least in a voluntary basis, make sure ESIC can be extended to them on a voluntary basis, because they're very small. We don't want to burden them with anything. The other thing that we're looking at is to make it mandatory to have ESIC coverage through notification by the central government for employees who are working in hazardous industries. Because even if they're small and they don't get included through a central notification, we want to make sure ESIC coverage is given to all those who are working in smaller units but which are engaging in hazardous activities. They get the benefit of ESIC coverage. And social security schemes are being extended even to gig workers and platform workers. That is now urban phenomena, and they should get that coverage. So we want to bring gig workers into it. We're also looking at reskilling of retrenched workers. Now in the context of COVID, this was all designed before, but in the context of COVID, we probably will have a situation where a lot of retrenched workers will need to have a reskilling exercise. And again, all occupations should be opened for women with night working rights, and also there making sure safeguards are provided for all of them. Provision also for social security funds for unorganized workers, and gratuity to be given for fixed term employment. So these are some of the things which are our commitment, which is revealed in the labor codes. 44 labor different acts have all been now compressed with extensive discussions and consultation. I must appreciate the Ministry of Labour, the minister, senior minister, Gangwarji, together with the secretary, have engaged with all strata, all stakeholders, all strata of workers, to make sure that their concerns are addressed, and therefore the possibility of having those 44 laws being reduced to 4 codes. Highlights I've given you are waiting in the parliament. Our commitment lies in having them passed after discussing in all the standing committees. लेबर कोड के माध्यम से
हम लोग जहां मज़दूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मज़दूरों को मिलेंगे, और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी ज़िलों में हमारे मज़दूरों को मिल पाएगी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है या उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोज़गार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविज़न किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, you know, we've spoken about 3 lakh crore emergency working capital facility. We have also spoken about no global tenders for 200 crore, up to 200 crore for Indian, small companies also to bid for those, and so on. So yesterday's announcement, I thought I'll very quickly give you. I will be providing this one slide. I'm spending not very much of a time on that. I'll move over to talking about one thing there. If you can please go back to the previous slide. One thing there on the tax deduction at source and tax collected at source, where we've reduced the rate by 25%. I will, after the presentation, have Revenue Secretary give you a clear explanation of who it includes and who it doesn't. So the TDS and TCS explanation, you have the Finance Secretary next to me, who is also the Revenue Secretary, who will be able to explain it. But otherwise, that slide will be given to you. So instead of going too much into detail, I just want to highlight the fact the EPF support of paying 24%, the 12% of employer, 12% of the employee is borne by the Government of India. 24% is being borne by the Government of India for the past 3 months, and we have extended that for the next 3 months also. June, July, August is also getting added. This is something which I did mention yesterday. And similarly for others, it has been reduced from 12 to 10% for the employer and the employee. However, the employee will get the 10% for the private, for the government-related public sector undertakings, where the government pays the 12 plus 12.
पिछले कल जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी, उसका बड़ा कारण ये भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे एमएसएमई हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, या मैं कहूँगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था, मार्च अप्रैल मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था, काम करने काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं, वो अपना 12% ही देंगे। I go over to today's announcements. I said there are three steps that we want to explain about the migrants. The first thing relates to free food grain. Free food grain supply to all migrants for the next 2 months. How is this? You're aware, we had already announced that for the public distribution system-based, card-based people who get their regular quota of rice or wheat and in their residences, we had added free 35 kgs for them, either of rice or wheat, and also said 5 kgs per individual, but per card 1 kg of pulse was announced earlier. And that additional 5 per month kg of wheat or rice was being given free. That was made clear. Now what we are saying is that continues, that remains intact. But for those who are non-card holders, meaning they are neither under the National Food Security Act, nor are they holders of any state level cards, for them they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice, or 1 kg of chana, so that is for per family. And if the person is remaining without card, he can also get it. We are engaging with the state governments to make sure that they know where these migrants are, they can approach them and give them, because most of these migrants who have no cards are staying in those camps which are being run either by the government or by the NGOs, and therefore, based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. So I know migrants are also moving out, either they're going back, very few are coming back. Irrespective, we are saying for the next 2 months, they shall get free rice or wheat and also 1 kg per card, per family. Without card also, you can get your rice, wheat or wheat or chana. So this will reach through the state governments. State governments will be implementing agencies. They will identify the migrants. They will take care of the full distribution, and they will provide the details. The initial assessment is what I've told you. The numbers may change depending on how the state governments are going to. We made provision for this many. That's exactly what I want to convey. प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते, या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे, और साथ में 1 किलो चना
प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation, where he said 5 pillars, and one of them is talking about technology-driven systems. This is one classic example for that, where in order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card, will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021. 83% is already done. So all the states and union territories will complete full FPS automation by March 2021. आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएँ। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हों, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशरी जो हैं, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last step for the migrant workers, we spoke about their food, their ration, portability of their ration. Now I'm talking about affordable rental accommodation for the migrant workers or the urban poor. Government has plans to launch, and very quickly it shall launch under the PM Awas Yojana for the migrant labor and urban poor, a particular scheme of affordable rental housing scheme, whereby we have 3 different ways in which we want to achieve it. We are asking incentivizing manufacturing units, industries, institutions and associations to, on their private land, build and develop affordable rental housing complexes. And we are also converting a lot of government funded housings in major cities which are remaining vacant into affordable rental housing accommodation
they can become affordable rental housing complexes, and this shall be done on a PPP mode through concessionaire agreements, through which they can invest somewhat some money to keep it up and also somewhat some money to make it ready, and then derive the rental, like the way the roads have, the toll little collections. Similarly, here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same. Central government organizations will also undertake in similar lines. The detailed guidelines will come from the ministry sooner. So urban migrants, urban poor now can look forward to having at least some basic rental accommodation for themselves. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए जहाँ वो काम करते हैं शहरों में, वहाँ पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाएँ, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मज़दूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। I move over to the Sishu loans of Mudra. This is a way in which we are going to help the smallest of small credit takers from the banks, where after the RBI giving 3 months moratorium, when they come back to have to pay the interest, the EMI, they will have a little problem, and we want to support them with some interest subvention. Incentive being, if you pay in time promptly, you get the 2% incentive, interest subvention incentive. So the current portfolio of Mudra Sishu loans, Mudra has 3 different types of loans. The Sishu is up to 50,000 is what they take as loan, only 50,000 rupees or less. People who have taken loans 50,000 or lesser, after the 3-month moratorium, when they come back to paying the EMIs, will have for the next 12 months an interest subvention support which will be of 2%, and that support will entail a total relief of 1,500 crores, which is for all the Sishu loan holders. Now, I just want to give you a broad indication of number. I don't think it's possible for me to straight away tell you the exact number, but I can indicate to you, because up to 50,000 will mean some people will have 10,000, some might have 15,000, some others might have 20. So actually, to get the actual number of beneficiaries, I might need a little more time, but roughly, if this outstanding is 1.62 lakh crores, if the total outstanding of Sishu loans under the Mudra category is 1.62 lakh crores, and on the assumption that all of them have taken 50,000, the maximum limit, it will be something like 3 crore, more than 3 crore people. And therefore, if this 3 crore is a conservative estimate, it can be slightly more than that. It will benefit. This 2% interest subvention will benefit about 3 crore people who are beneficiaries of the Mudra Sishu loan. I'm not talking of all the 3 categories, only the Sishu category, which means 50,000 or less loans. जो मुद्रा शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की
जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है, और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं उनको 1500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी कि उनके ब्याज में 2% की राहत छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी, यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। The next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crores of rupees. This is going to be because most of their livelihood has been adversely affected. Street vendors have not been allowed to do anything during the lockdown, and therefore within a month the government will launch this special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. And when I say all the street vendors, there are 50 lakh street vendors as per one estimation which comes from all the state governments. 50 lakh street vendors will be able to avail of the 5,000 crore special credit facility, through which once the lockdown is lifted, they can start their business back, they can buy their products to sell, and so on. So 50 lakh street vendors will be taken care of. We are giving an initial working capital of up to 10,000 rupees. And for this, we expect a liquidity provision of 5,000 crores will be made by the government. तो जहाँ एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा, और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने MSME की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज़्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेडी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। I move to the next, which is generation of, we've gone to the housing. ये कर दिया हमने। अच्छा, there is a program, that's fine. We wish to give the middle income group, and that too the lowest strata of the middle income group, who get only 6 lakhs to 18 lakhs annual income. So they are probably above poverty line, all right, and slightly over that, but clearly the middle class, the lowest rung of middle class, who are
up to 6 to 18 lakhs only annual income. For them, there is a credit-linked subsidy scheme which was introduced by Government of India in May 2017. This was operationalized from 17, but it was extended only up to 31st March 2020. This scheme benefits a lot of people who want to have simple, affordable houses. So this scheme, which is credit-linked subsidy scheme, is being extended up to March 2021. Government will extend this scheme, and we think over and above over 3.3 lakh crores of 3.3 lakh families which benefited till now, 3.3 lakh families which benefited till now will now additionally have another 2.5 lakh middle income families which will join in by this 1 year extension that we are offering. That scheme, which started in 2017, was to end in March 2020. We are extending it by 1 more year till March 2021. And we think in this 1 year, another 2.5 lakh people will benefit from this so that they can have affordable houses for themselves under this particular scheme, credit-linked subsidy scheme. By doing this, we think we'll immediately be able to spur jobs creation. Immediately, the demand for steel, cement, and also transportation, heavy-duty transportation, will all improve. And construction materials will also come to be demanded. And therefore, this will have immediate impact on the demand side of the हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्सटेंड की थी, जिसका लाभ 3.3 यानी कि 3,30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपये का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। I go over to talking about employment creation. Here, we are talking about the Campa funds, about which all of us know. We are not creating a new scheme or anything, but these Campa funds, which have been lying in various states, have now been given a push. 6,000 crore rupees worth projects have already come, proposals have come from states. They are getting approved in the next 10 days. What it shall do for tribals and Adivasis, it will generate employment, because this 6,000 crores proposals which have come from the various states speak of employing people, particularly the tribal and the Adivasi people, for afforestation and plantation related works, for artificial regeneration and also for assisted natural regeneration, and forest management, forest protection, forest wildlife related infrastructure development, wildlife protection and management, and so on. So this is something which the states have actively come forward with proposals which are only about 6,000 crores now, but we have understood from them many more such proposals are waited, and that shall immediately create a lot of jobs, considering that monsoon is fast approaching. This is the time when all these
vriksharopan and other things happen. And therefore, this scheme is given a special push so that the tribals and Adivasis will have some money in their hands by joining in these work. Somewhat to an extent, some states also want to extend it to semi-urban areas and utilize this fund. That is something which the central government and the environment ministry will take care of addressing it. So semi-urban and partly fringes of urban areas, if they want to use it, it's up to the states and the environment ministry. But largely, this is going to generate employment for the tribals and Adivasis, for forestry related work and forest infrastructure related work, 6,000 crore to start with. रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज़ में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज़ में, आदिवासी क्षेत्रों में, और इसके अलावा चाहे शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। The last two for today relate to farmers. We are providing a 30,000 crore, actually a 30,000 crore additional emergency working capital fund through the NABARD. And this is essentially a refinance support which the NABARD gives. You may ask me if it is something which is new. NABARD does this already. Yes, it does. 90,000 crore is annually the average they spend on this. We are now putting an additional 30,000 crore. This additional 30,000 crore will be immediately released so that the post-harvest Rabi work which is going on. Rabi, almost all the states have reported their harvests are over. Many states have successfully even close to completing the procurement of produce. This also happened in many states. But immediately post-harvest, if there are any requirements for post-harvest Rabi related work, this money will go and help the farmers, the small and the marginal farmers. This is for particularly small and marginal farmers. And not only post-harvest Rabi, but also the preparatory work for Kharif. Even for that, this will be of help. The regional rural banks and the rural cooperative banks will be the ones which will use this credit. Many of the state cooperative banks, about 33 state cooperative banks, 351 district cooperative banks, and 43 regional rural banks have also come forward to avail of this on-tap based lending. So it will be directly reaching rural India, directly reaching small and marginal farmers, and this is 30,000 crore in addition to what they normally do, which is 90,000 crore. This will benefit 3 crore farmers. जहाँ पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को फसल की खरीद के लिए पैसा दिया, जिसकी जानकारी हमने पहले दी, उसके अलावा अगर कहा जाए तो कृषि के सीज़न में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी किया और कोई नुकसान कृषि के क्षेत्र में नहीं होने दिया, ऐसा प्रयास किए गए। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है, और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहाँ पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। The last that I would want to tell you is absolutely critical because it brings a newer dimension to some of the things which have been happening. I am referring to the Kisan Credit Card. Nearly 2 lakh crores of concessional credit will be extended to boost the farming activities. 2.5 crore farmers will get the benefit.
And this special drive will include these 2.5 crore farmers who don't have at the moment the Kisan Credit Card, because a rough estimate is if there were 9 crores of PM Kisan Samman award, receivers, of that about 2.5 crore farmers do not have Kisan Credit Card. Now we are reaching them and giving them the Kisan Credit Card. But more importantly, something which the Honorable Prime Minister has been referring to, he has referred to in 2-3 of his speeches, that fishermen and animal husbandry farmers also shall be included in the Kisan Credit Cards. And therefore, they will also be able to avail of this concessional credit boost that we are giving to the extent of 2 lakh crores. This will enable all the farmers to gain access to institutional credit at concessional rate. 2.5 crore is the farmer number that I've given you, who will be covered. And in this, I'm not giving a specific number, but animal husbandry and Matsyakar will all be added. Fishermen will also be added. जहाँ एक और कई योजनाएं पीएम किसान, जहाँ 6,000 रुपया करोड़ों किसानों के खाते में जाता है, या सॉयल हेल्थ कार्ड हो, बाकी योजनाएं मोदी जी ने चलाई, वहीं पर अब एक 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। एक विशेष अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग, जैसा मैंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे। Today's presentation is for the second tranche is now over. I just want to highlight the fact that in these days of part of full lockdown, media, all of you all have been keen. You've been attending all our press conferences, hearing the Prime Minister. You've really been a catalyst in the stimulus giving exercise. So I thank all of you all, which the Honorable MOS did mention even at the start. We certainly look forward to having you pass all this information, disseminate this information, spread this information so that people get to know what this government is doing. So even as we are looking at COVID as an opportunity, not look at COVID as, oh my God, my economy. No, yes, there are people suffering. Yes, we notice a lot of people undergoing severe, constraints. They are walking back to their homes. Prime Minister had requested, please stay wherever you are. But nevertheless, emotions being what they are, and their concerns being what they are, we understand migrants moving. We will have to extend all benefits, and that's what we are trying to do. And therefore, in this entire COVID-related response, I thank the media for constantly keeping every concern heard both ways, from the citizen to the government, and from the government, the stimuluses and other things that we want to do to the people back. So thank you very much. Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV18. Ma'am, 2 things. You said 70,000 crore rupees investment will come under the CLSS scheme for housing. Where will this money come from? Will government invest this since it's a PPP? Has government earmarked how much will they invest in next 1 year out of this 70,000 crore? And secondly, you said for the One Nation, One Ration Card, a ration card is normally given to one family and only 1 or 2 members of the family are migrants who are moving. So how will the family benefit if the 2 members are moving and 3 are, say, for example, in the same native place? How will the family get a benefit under this scheme? And for street vendors, you said 5,000 crores will be given as a special credit. Will banks disseminate this credit? Will there be some parameters for bank to make a street vendor eligible for this 10,000 rupee loan, the initial working capital that you said?
On the housing, I had very clearly mentioned that it's going to be in PPP model and it's going to be on a concessionaire kind of a approach towards bringing in investment and, looking at government assets which are also there, which we are willing to come in with. And we are also encouraging government institutions to build in their lands for such schemes. So it's going to be both private and public on a concessionaire kind of an approach contract that will be signed. So the 70,000 is obviously therefore going to be from both sides. The second that you asked me is about the portability of the ration cards. When obviously we're talking about a digitized, technology-driven, benefited PDS card, it should be possible, and that is why I've listed the number of states. Not all states are yet complete in doing that digitization exercise towards it. The card holder, if he possesses the card here or card there, will be able to draw on. Suppose the family is already drawn half of the ration for themselves. The rest half he shall draw from wherever he is. That is the whole idea of technology-driven system, where one nation, one ration card gives us that flexibility through technology, that both the family, wherever it is, and the migrant worker, wherever he is, will be able to draw that share which they can divide between themselves. And the third that you asked me about the credit which has to be extended to street vendors, I said already the number of street vendors of whom we have a certain number. The modalities will be worked out so that banks can extend that. 31. 1 minute, you want to? Was your question on the CLSS or on the rental housing? Because they're both. Both of them are part of the Pradhan Mantri Awas Yojana. The credit-linked subsidy scheme is operated through housing finance companies under the National Housing Bank. So loans are given by housing finance companies to middle-class borrowers, along with a subsidy which goes from the central government to reduce the cost of the house to the person acquiring the house. So that the 70,000 crores relates to the increased duration of the CLSS scheme, which had expired on 31st March. That scheme now continues till 31st March 2021. On the rental housing scheme, which will also be funded through the PM Awas Yojana window, what the Honorable Minister said, it will be through PPP, through a concessionaire. About the portability of the ration card, as Honorable Finance Minister has explained, that there is a digital and technology-driven system, and you all are aware that every ration card, all family members are seeded with Aadhaar number. So that gives an advantage that, let's say, a family member, he is living in some other city, through his Aadhaar number, he can withdraw the ration quota, which rest of the family members have not yet withdrawn. So it is possible, and that is what the portability means. मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल जो शहरी माइग्रेंट हैं उनको लेकर के है कि केंद्र सरकार ने 11,002 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए। क्या ये कोई जानकारी राज्यों ने दी है कि अब तक कितने शेल्टर होम्स बनाए गए और कितने मजदूर उनमें रह रहे हैं? क्योंकि रास्तों में अभी भी आप देख सकते हैं चारों तरफ मजदूर ही मजदूर नज़र आ रहे हैं जो अपने घरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। Yes, I've told you roughly what the figures are, but we can obtain it and give it to you. The states से कितने भी जानकारी मंगवाना है मंगवा करके दे सकते हैं. If unless the DEA has anything to add. इसमें ये पैसा अप्रैल के महीने में दिया गया था, तो अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर अस टू आस्क द स्टेट्स कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया है, लेकिन जिन भी माइग्रेंट वर्कर्स को खाना पीना, रहने का स्थान, किराए का मकान, जो भी कार्रवाई हुई है पिछले 1-1.5 महीने में, वो इसी पैसे से हुई है। 114। मैम मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। मैम एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो आपने फार्मर्स के लिए 3 करोड़ फार्मर्स के लिए जो 4.22 लाख का दिया है, उसको 3 महीने का मोरेटोरियम आपने बढ़ाया है। RBI ने जो है जो लोन, जिन लोगों ने लोन लिया था उनके लिए 3 महीने का मोरेटोरियम दिया था, लेकिन ये बोला गया था कि जो लोग ये मोरेटोरियम अवेल करेंगे उनकी EMI जो है 10 या 12 EMI बढ़ जाएगी बाद में। तो क्या किसानों को जो 3 महीने का मोरेटोरियम दिया जा रहा है उससे ऐसा तो नहीं कि उनका भी टेनोर बढ़ जाए बाद में?
और दूसरा मैम माइग्रेंट लेबर को लेकर सवाल है कि अभी माइग्रेंट जो हैं बहुत सारे हैं जो अपने स्टेट्स को वापस जा रहे हैं और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि आपको मनरेगा में जो है उसमें काम दिया जाएगा। अब इंडस्ट्रीज़ को 30% का वो वर्कर्स को परमिशन मिल रही है कि आप काम शुरू करिए, लेकिन उनको जितना परमिशन मिल रही है उतने लेबर या उतने वर्कर उनको अब नहीं मिल रहे। तो क्या रोड मैप है माइग्रेंट्स लेबर को वापस लाने का, क्योंकि उनके बगैर जो है इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। पहले मैं माइग्रेंट का विषय जवाब दे देती हूँ। I have from the beginning told you that this government is concerned about migrants and explained in front of you as to what are the various steps we have taken. Even today, unfortunately, and touches all our hearts, we see migrants, family with children with their bags and baggages walking in the roads and going. I just want to tell you that the union government has definitely worked together with state governments. Worked together with state governments to provide, the moment we were ready to transport them, to provide train facilities. The first step was Prime Minister asking all of them to stay where they are so that they are safe, food will be provided, shelter will be provided. But जब हम ट्रेन सर्विसेज शुरू कर दिए तो वो चल जा सकते हैं। उसमें आई जस्ट वांट टू गिव यू सम आंकड़ा। 1200 trains for Shramik Special are available and ready so that every day 300 Shramik Special trains can run. इसका पूरे खर्चा रन करने के लिए 85% तक सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, बाकी 15% स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू स्पेंड बाय सेइंग आई वांट दैट मेनी नंबर ऑफ ट्रेन्स। मैं सिर्फ आपके लिए वो माइग्रेंट का विषय, बिकॉज इट्स नाउ समथिंग ऑन विच द एंटायर कंट्री फील्स एंड ऑल ऑफ अस फील इक्वली रियली वेरी बैड, सो आई जस्ट वांट टू गिव यू द डेटा. The state government has to accept and ask for, I want this many number of trains. Railways have already run 806 Shramik special trains, in which 10 lakh migrant workers have gone to their respective destinations. Wherever from, they've gone back to their respective destinations. And the state's Sankhya, I just want to give you. UP has accepted 386 trains. 386 trains UP has requested, accepted, paid that 15% and brought their migrant laborers back. Bihar has accepted 204 trains. 204. Madhya Pradesh has accepted 67 trains. So I just want you to know that this is the number through which many of the states have requested, placed a request, arranged for the modalities. My workers are here, I want them all to board from this particular station, and the moment they say that within 8 hours, not even 8 hours, within 3 to 5 hours, the trains are provided in that station. And in that station, they have to take their passengers back to their states. I just want to make sure that these numbers are given. There are other states, I'm not elaborating unless you are interested. There are 4 more states I can give you. Jharkhand has taken 44. Rajasthan has taken 18. Chhattisgarh has taken 7. West Bengal has taken 7. So there are requests coming even now. Yes, we want more, we want more. And as soon as the request comes, we are trying to give them. So states and center are working together to have their migrants taken back. But your question was, if they are coming back, they have to come back, what kind of a planning are we doing? So I am now talking about those people who are still going back. And as I said, Manrega provisions are being made. The moment they want to come back, hopefully after the lockdown is lifted, they can come back. 44.
I think just हाँ, एक मिनट detail. moratorium में कुछ you wanted to tell Secretary Bank? देखिए, इसमें किसानों को एक तात्कालिक राहत दिलाने के लिए मॉरेटोरियम की सुविधा दी गई और जो इंटरेस्ट सबवेंशन 2% और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पे 3% का जो सुविधा मिलता है उसको भी मई 31 तक बढ़ा दिया गया है। तो जो किसान अभी जैसे फसल की कटाई हो गई, प्रोक्योरमेंट हो गया, पैसा मिल गया, जो वो रिटर्न भी कर रहे हैं तो उनकी प्रिंसिपल रिपे हो जाएगा, तो उन पर कोई भार नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ किसान अगर देने में असमर्थ है तो जो जितने पीरियड के लिए वो मई के बियॉन्ड जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट वो स्प्रेड हो जाएगा आगे उनके जो इंस्टॉलमेंट्स बंधा हुआ है। दिस इज़ मोनिका फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, मेरा सवाल है कि कल आपने एमएसएमई की डेफिनेशन में रिवीजन की घोषणा करी थी, तो ये केवल एक अनाउंसमेंट बन के ना रह जाए, इसके लिए क्या आप ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं? कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? इसके अलावा आपने जो जितने लेबर रिफॉर्म्स आपने अनाउंस करे हैं, ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? लेबर रिफॉर्म्स के मैटर मैंने इसलिए जिक्र किया है कि 44 जो लेबर रिलेटेड कानून थे वो सब अभी कंडेंस होकर के 4 लेबर कोड के नाते पार्लियामेंट तक पहुंच गया, एक आध स्टैंडिंग कमेटी में भी है। सो थ्रू द पार्लियामेंट्री प्रोसेस those labor codes will come for implementation. But as regards MSME definition, I would want Secretary EA to. MSME की डेफिनेशन आज के दिन उनके एक्ट में है, तो या तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस से इसको चेंज करेंगे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से कर सकते हैं तो वो भी चेष्टा करेंगे कि इसको कर लें। लेकिन ये काफ़ी वर्षों के बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है कि इसको इस तरह से हम चेंज करेंगे, तो ये एक डिसीजन हो गया है। इसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस से करना है या दूसरे प्रोसेस से करना है, इसको देख के ये हो जाएगा। Number 9. Pallavi from CNN News 8. Back to the migrant workers question, ma'am. You know, there are two things here. Because of the social distancing norm, you have a 33% cap of employee factory or an industry. Which means a large number of migrant workers, we spoke to say that we don't have any reassurance that if we come back, we are actually going to get our jobs back. That's one concern. Do you plan to increase that cap at some point of time? And second, any incentives to these migrant workers to come back? I think on that a lot of work is happening in that the social distancing, as long as it has to be respected, we'll have to make the protocols also comply with that requirement. But that doesn't mean we'll deny workers who want to get back to their jobs. I'm sure this is something which I'll take back from you. Not that the Home Ministry has not had detailed discussion with Labour Ministry also. So some protocols will emerge on that to make sure that they can get back to their work. And also about any incentives, we'll take a call. 13. मेरा सवाल आपसे ऐसे आसिफ इन दिनों से मेरा सवाल एक है कि आपने किसान क्रेडिट योजना जो बनाई है उसमें 25,000 करोड़ रुपया दिया है, तो पर किसान को कितनी इसमें लिमिट दी जाएगी? और दूसरा सवाल हमारा है कि भारत के अंदर जो समाचार पत्र छोटे हैं इनके लिए कोई पैकेज अभी तक नहीं आया, जबकि इनसे लाखों आदमी इनसे जुड़े हुए हैं। You want to say anything on the Kisan credit card? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट कोई नहीं है, कितना आपके पास खेती है उस हिसाब से उसकी लिमिट तय होता है। वो स्केल ऑफ फाइनेंसिंग के रूप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका स्केल है। लेकिन 3 लाख तक जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके लिए वो 3 लाख का लिमिट जो तय किया गया है उसमें उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा भी मिलती है और उनको कोलैटरल फ्री लोन भी मिलता है। तो आज के दिन में लगभग 6 करोड़ 80 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से कवर्ड है। मैं सुझाव के नाते सुन लिया। 26. I think when the turn of the media comes, your question will be answered. Ma'am, out of these 50 lakh street vendors, how many of them are getting loans right now? I mean, is there any estimate? And you said that 8 crore migrant laborers will get benefit from this free ration. So is it the total number of migrant laborers or? No. That's certainly not any number on which you can peg anything.
because at the moment that number is arrived by different states giving us numbers of people who have remained in various camps, be it government-run camps, be it private sector or NGO-run camps, charity organization-run camps. States have been intensely monitoring them and also probably going to test and other things. So they have directly kept in contact with all of them and given us a andaz number from each of the states. So it is only an approximate number, and many of them, as I said, are probably returning. Many of them have probably gone back to their employers. So we really don't know. The number that I've quoted you is the number which we have summed up from the states and made provision for. Other than that, that number does not hold any other, it doesn't imply anything else. But we've made provision for that many. Last question, 11. जहाँ तक street as far as the question of street vendors are concerned, Ministry of Urban Development, they are in the process of identifying through the urban local bodies, and maybe some of them would have got a loan through the Mudra segment, under the Mudra segment. But if they need an enhancement, that can also be done, and those who do not have a formal source of financing, they will be identified and they will be also provided this credit facility. Ma'am, this is Aishwarya from India Today. You spoke about helping the migrants, those who reach home. That's when they'll get the ration. There are a lot who are already... No, I didn't say that. I didn't say anything near that. So what about those who are on foot? Because we still have people who have long journeys to make. So anything for those people who are on foot? First of all, I referred to migrants who have already gone back to their villages in the context of Manrega. I have also referred to the ration card, which will be one nation, one ration card business, on which we said 83% coverage is already done, the rest have to be done. But however, before March 2020, 2021, we'll complete that. As regards migrants who are walking, which is very, very touchy and makes all of us, there's a tug at my heart when I watch this, and all of us feel terribly bad. We are making every state government provide freshly cooked food for them. Even as they're walking, maybe if they're going to any shelter places where food is being provided, state governments are conscious and they have to be providing it. So for the migrants, I think even as they're walking, giving dry ration may not help. So it is up to the state governments. The state governments from where they are moving to where they are moving, it's for those state governments to make the provision. Now that I have announced that non-ration card holders can also be given, that's not something I'm doing now. I'm giving it for free now. 5 kgs and 1 kg chana, all that is being given for the next 3 months free, next 2 months free, 2 months free is being announced now. But till before now, we had already said that the states can, at a discounted rate of 22 rupees for rice and 21 rupees for wheat, any quantity can be lifted on credit without paying anything. State governments have been given that facility so that they can take that amount of rice and wheat and pulses so that they can cook the meal and serve it to them. So that provision has been given to the states and to also NGOs, charitable organizations, gurudwaras, whoever wants to do it. So states and other organizations can certainly benefit by the earlier thing that was provided by central government. Now I've given this additionally, totally free, but this is also dry ration. So for people who are moving, I would think the state governments can provide them cooked meal in the nearest available shelter homes. Thank you very much, ma'am. Thank you, friends. The clarification on TDS and TCS, I would request the Revenue Secretary to. कल माननीय वित्त मंत्री ने TDS और TCS के रेट्स के कटौती का अनाउंसमेंट किया और कल रात में ही इसके बारे में एक डिटेल सर्कुलर CBDT से उसके बारे में इशू हो गया है। मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये TDS और TDS आपको मालूम है कि पूरे साल के अंत में एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है और उसमें उन्हें टैक्स देना पड़ता है, इसलिए कि हमें लोगों को
अचानक साल के अंत में काफ़ी ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, इसलिए TDS और TCS की व्यवस्था है, जिससे कि करीब करीब जब भी ट्रांजैक्शन हो, किसी को कभी कोई पेमेंट हो या कभी बैंक से इंटरेस्ट मिला हो या रेंट मिला हो, उसी समय में अगर उसका एक सर्टेन पोर्शन, उसके परसेंटेज हमारे कानून में दिया गया है कि किसी का 10% है, किसी का 1% है, किसी का आधा % है, इतना TDS काट करके सरकार को जमा हो जाता है, जिससे कि जब बाद में जब रिटर्न फाइल करने की जब ज़रूरत होती है, उस समय में उतना पूरा टैक्स ना भरना पड़े और इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो ये इसका जो रेट था, तो अभी जो एक सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसका पर्पस ये है कि अभी जो बिजनेस में जो पेमेंट हो रहे हैं, उस पेमेंट का एक सर्टेन पार्ट 2%, 5%, 10% जो पहले TDS करता था, उसमें 25% की कटौती कर दी गई है, जिससे कि लोगों को पेमेंट ज़्यादा मिले, मार्केट में लिक्विडिटी रहे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहले अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट हुआ तो नियम ये था कि 1% उसका TDS कट जाएगा। यदि किसी को अगर रेंट मिला अगर या बैंक से अगर इंटरेस्ट मिला तो उस पर 10% का TDS कट जाता था। तो अभी उसमें 25% की कटौती की गई है, जिससे कि उतना ज़्यादा पैसा लोगों के पास रहे, बिजनेस के पास रहे और वो बिजनेस कर पाएँ। तो करीब करीब 23 ऐसे आइटम हैं जिसमें कि TDS की कटौती की गई। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जितने भी तरह का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन दी इन दी बैंक अकाउंट्स, डिविडेंड पेमेंट्स, इन सब पे 10% का टैक्स हुआ करता था, TDS हुआ करता था, अब वो 7.5% होंगे। उसी तरीके से जितने भी पेमेंट्स टू दी कॉन्ट्रैक्टर है, पेमेंट्स टू दी प्रोफेशनल्स हैं, पेमेंट्स टू प्रोफेशनल, उसमें 10% का TDS हुआ करता था। टेक्निकल सर्विसेज में उसमें भी 10% का TDS हुआ करता था, उसको भी 7.5% किया गया है। तो ये सब कि बिजनेसेस के पास थोड़ा सा पैसा रहे उनके पास और लिक्विडिटी रहे, इसके लिए किया गया है। उसी तरीके से यदि किसी ने अगर प्रॉपर्टी अगर बेची है तो प्रॉपर्टी बेचने के समय में जो पैसा मिलता है उसका 1% कट जाता था, रेंट अगर मिलता था तो उसका 10% कट जाता था, उस सब में भी कमी की गई है। उसी तरीके से एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का भी था, जिसमें कि अगर किसी ने अगर गाड़ी खरीदी तो उसमें में गाड़ी की कीमत का 1% जो है सो TCS कट जाता था, उसमें भी 25% की कटौती की गई है। तो इस तरह से मैंने कहा कि करीब करीब 23 आइटम ऐसे हैं जो TDS के हैं और 12 ऐसे आइटम हैं जो कि TCS के हैं, इन सभी में कटौती की गई है। लेकिन कुछ, जैसे कल एक सवाल पूछा गया कि सैलरीज़ के बारे में ये TDS के रेट में कटौती क्यों नहीं की गई, इसका मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी जो सैलरी दी जाती है, सैलरी देने के बाद अगर जो बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं, जैसे किसी का 80C का डिडक्शंस हो या प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हो, ये सब का डिडक्शन को ध्यान में रखने के बाद जितना भी जो सैलरी पेमेंट करते हैं उस पर ही TDS कटता है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों को अंत में, साल के अंत में, मतलब कि उनको ज़्यादा टैक्स उस समय में देना ना पड़े और इंटरेस्ट ना करे। अगर मान लीजिए कि अगर उनका भी अगर हम TDS अगर कम कर देते तो इफ़ेक्टिवली जो लोग हैं, सैलरी अर्नर्स हैं, उन पर कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता, क्योंकि उनको साल के अंत में उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता और इंटरेस्ट भी देना पड़ता, इसलिए हमने नहीं किया है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कैश विड्रॉल है, जो पिछले साल सरकार ने लाया कि जिनके जो बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं उस पर 1% का TDS है। तो चूंकि हम चाहते हैं कि डिजिटल में जाएं, कैश का इतना बड़ी मात्रा में लोग कैश विड्रॉ ना करें, उनको भी हम डिस्करेज करना चाहते हैं, तो उनमें भी कटौती नहीं की गई है। उसी तरीके से जो फॉरेन में रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो इन सब 3-4 आइटम को छोड़ करके बाकी जितने आइटम्स हैं जो कि लार्जली बिजनेस रिलेटेड हैं, जिससे कि बिजनेस को काफ़ी रिलीफ मिले, उनका हमने TDS 25% कम कर दिया है।